Hello friends, very good morning. Namaskar dosto. Very warm welcome to another edition of Sunday Analysis with SD. मैं हूं SD Shanando Dash. I'm a Forex commodity global macro specialist. I also look at multi-asset investment and trading. सो ये जो वीडियो है पहले बता देता हूँ कैसे ये वीडियो होगा. आई लुक एट द मैक्रो पिक्चर्स. नाउ जितना मैक्रो आई लुक एट उतना कवर करना इज नॉट पॉसिबल इन दिस वीडियो. सो ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट मैक्रोज है हम लोग उसके तरफ देखेंगे. एंड इसके बाद डिफरेंट एसेट क्लास में क्या अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं, कैसे डेटा के साथ रिएक्शन हो रहा है, ओवरऑल जो मल्टी एसेट पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू लुक थ्रू डिफरेंट एसेट क्लास. सो चलिए चालू करते हैं. और आप ये ग्लोबल मैक्रो और उसके बारे में और जान सकते हैं इफ यू गेट इन टच विथ ईलर्न मार्केट्स, और आप मेरे साथ एसोसिएट हो सकते हो विथ थ्रू दिस कोर्स मास्टर क्लास इन एडवांस कमोडिटी एंड करेंसी विच इज पार्ट ऑफ Elan Markets flagship program, multi-asset trading mentorship program, which is an awesome program as it gives you exposure to 5 different mentors with 360-degree view of the market. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो हमारा यूजुअल स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी डेटा. डेटा इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. उसमें हम लोग आने वाले दिन में जो डेटा है विल टेक अ लुक एट दैट. बट उससे पहले हम लोग पास्ट डेटा को एक बार देखेंगे और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा था उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे. मिनिमम 2 स्टार ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में मैं हूं. सो यहाँ पे जो डेटा को आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जापान पीएमआई विच इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग. सर्विसेज पीएमआई, China services also above 50 means growth. Overall, European कुछ areas like Italy जहाँ पे stock market is on fire has seen overall growth, whereas France is seeing weakness in service sector and Germany is also seeing weakness. France, Germany दो major economy है यूरोप का, वहां पे सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर में वीकनेस दिख रहा है. सो यूरोप इज अ नॉट अ होलिस्टिक ग्रोथ स्टोरी नहीं है, इंडिविजुअल कंपार्टमेंटल ग्रोथ हमें दिख रहा है. एंड जर्मनी जो उनका सबसे बड़ा इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन या यूरोजोन का, दैट हैज बीन स्लोइंग डाउन. कई टाइम से इट हैज बीन स्लोइंग डाउन. यहां से अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन दिस 8:30 ऑन ट्यूसडे the ISM services PMI came, which was not too bad, but definitely weaker than previous. And the market sold off the interest rate, means bonds went up, long-term bonds, but overall level of interest rate drop and there was continued sell off. जो weakness हम लोग डॉलर में देख रहे थे उसका फर्दर फॉलो अप वीकनेस डॉलर में चालू हो गया. सो लास्ट वीक का जो मेन थीम जो मुझे नोटिसेबल लगा, दैट इज वन इज डॉलर वीकनेस, one is interest rate going down and gold going up. These three combinations, whereas dollar and interest rate going down generally is positive for gold, but जैसे gold broke higher, that is definitely something to specially look at. तो इसके बाद हम लोग विल कम टू ओवरऑल नेक्स्ट शेयर ऑफ विच वाज द मेन हाईलाइट ऑफ डेटा इज ऑन द ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन. ईसीबी एज जैसे हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि ईसीबी विल बी रिलेटिवली हॉकिश, और ईसीबी वाज लाइक दैट एंड यूरो बेनिफिटेड. यूरो हमारे जो ट्रेड था इट फर्दर वेंट इनटू प्रॉफिट. Now, next final came the non-farm payroll. Non-farm payroll is सब लोग समझ नहीं पाए ठीक से रिपोर्ट को. रिपोर्ट वाज नॉट अ वेरी गुड रिपोर्ट एट ऑल. यहाँ पे हेडलाइन एक्सपेक्टेशन था कि 2 लाख जॉब्स ऐड होंगे, 200,000, बट इट एडेड 275,000. तो आपको लगेगा व्हाई आई एम सेइंग इट्स बैड. लुक एट, विल टेक अ लुक एट द इंटरनल्स. इंटरनल्स देखिए यहाँ पे एवरेज आवरली अर्निंग सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन विच इज वेज इन्फ्लेशन. लास्ट टाइम का जो डेटा था इट वाज 353, so there was significant revision in the data. This was downward revision. So last month or current month, so last month is 229 and 275 if we add up, and previous जो data था 353 and this expectations we add up,
the data was actually less. The number of jobs added was less than the combination. तो एंड साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल्सो टिक्ड अप बाय 0.2%, जो ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट डिड नॉट चेंज मच. सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में एक वीकनेस दिखा, साथ में वेज इन्फ्लेशन में भी वीकनेस. सो विल कम टू दिस नॉन फार्म पेरोल. ये ईएन मैक्रो माइक्रो में है हम. This is my favorite website to do macro analysis, or if you are my student, you can get a very exclusive offer, specially available to my students. So don't directly go direct from the website. There are special links, so you use those special link available आपके ड्राइव में दिया गया है, उसका इस्तेमाल करके सब्सक्राइब कीजिएगा. You will get a way better rate. सो यहाँ पे जो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि देखिए यूएस का क्विट रेट, जब भी इकोनॉमी धीरे धीरे वीकनेस की तरफ जाता है, देन द क्विट रेट, लोग जितना जॉब छोड़ रहे हैं, दैट डिक्लाइंस. एंड वो जो अपना टॉप रीच किए थे ये लेवल इन 2022 से वी हैव सीन स्टेडी वीकनेस, and job openings we have seen weakness, number of job hires all have been moving towards downside. साथ में हम लोग देख सकते हैं कि जॉब लूजर्स नॉट ऑन टेम्पोररी ले ऑफ, मतलब परमानेंट जॉब लॉस. So permanent job loss, you can see every time before the recession we see a carve around, ऐसे carve करके ऊपर जा रहा है. Similar kind of curvature मुझे यहाँ पे दिख रहा है. So I am closely monitoring that situation may be turning, और ये एक रीजन बन सकता है जिसके वजह से ओवरऑल लॉन्ग टर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट डंप हुआ. हम लोग के पास ऐसा डेटा कुछ नहीं था जो उसको जस्टिफाई कर पाए व्हाई वी सॉ दिस काइंड ऑफ ड्रॉप इन द इंटरेस्ट रेट. बट दिस डेटा, दिस ग्रेजुअल गो अप इज क्लियरली टेल्स अस कि हाँ नहीं, कुछ समथिंग इज चेंजिंग इन द इकोनॉमिक डायनामिक्स में, कुछ चेंज हो रहा है. So this is another data from the unemployment. This is average hourly earnings. So overall level of earnings, which is wage inflation, वो भी गिर रहा है quite sharply now. So that this is not really a healthy thing. Every time we see a major drop, it adds pressure on consumers. Consumption slow हो जाता है and overall economy में उसका impact दिखता है. So overall wage inflation down means we will see downward pressure on overall US inflation in the coming months. So I'm expecting Federal Reserve jo rate cut, it may not be 50 basis points, possibly could be very well higher this time around, because later half of the year may there is a significant risk koi major Six Sigma means jo significant recession kind of event trigger होने का. There are, it may not happen, but there are some significant triggers, और उसके साथ साथ इकोनॉमी में जो changes हो रहा है, that is also notable. इसमें हम लोग ये भी सर्च कर सकते हैं, बिजनेस साइकिल सर्च कर सकते हैं. तो यूएस का बिजनेस साइकिल जो इंडिकेटर्स है, जो लीडिंग इंडिकेटर्स is still dropping, and historically अगर देखा जाए such turnaround, such drop has coincided with a downturn in the market. So the risk of a downturn is still remains large. So 2024 is one of the year where underlying में ये risk चल रहा है. इसके लिए टाइम प्रेडिक्ट करना ही नहीं चाहिए. दैट्स व्हाई मेनी पीपल फेल. 2023 में जो लोग बोले थे रिसेशन आएगा, fail. We need to have a model on this, but abhi tak though if you are interested in learning this model, you can once again join the CCMT program with Elad Markets. तो broadly that is the US का macro picture. Unemployment में भी जो weakness दिख रहा है, inflation I think will continue to come down, and that means further rate cut down the line from the Federal Reserve. तो इस मामले में चलिए सेंट्रल बैंक्स के ऊपर एक बार देख लेते हैं. विल लुक एट द सेंट्रल बैंक्स.
सेंट्रल बैंक्स में फेडरल रिजर्व और मार्केट का एक्सपेक्टेशंस में कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ उसको भी देखेंगे। करंटली मार्केट वंस अगेन मोर डोविश हो गया, मतलब लास्ट टाइम जो हम लोग देखे थे इट वाज प्राइसिंग 75 basis points rate cut, now it is once again pricing 100 basis points and rate cut expected चालू हो रहा है जून से, एंड जून से मार्केट इज प्राइसिंग कि every meeting Fed will cut rate by 25 basis points. So this is a forecast. Historically, such a fast rate cut has coincided once again with the downturn. Fed और market के बीच में एक tough fight चल रहा है. Fed is communicating that no, rate will do 50, will we are no hurry में नहीं है rate cut करने के लिए. Market is whereas pricing double of what Federal Reserve has projected. तो ये आने वाले जो मेरा लाइव सेशन है ऑन एफओएमसी उसमें मेरा फोकस ही रहेगा कि ये देखना कि इज फेड कंफर्टेबल विद द करंट प्राइसिंग ऑफ द मार्केट, या तो उसके कम्युनिकेशन से इट वुड लाइक टू फर्दर चेंज ये रेट कट का एक्सपेक्टेशंस. सो विद दिस एमएम डेली, सो नेक्स्ट वीक का जो कैलेंडर है, नेक्स्ट वीक में कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम ऑल इज द यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, जो आ रहा है ट्यूसडे को. सो हियर द ओवरऑल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन नीचे की तरफ डिक्लाइन किया था सिग्निफिकेंटली, बट फर्दर ये स्टेबलाइज हुआ है. कोर इन्फ्लेशन, दिस इज द कोर इन्फ्लेशन, ये कोर इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हुआ है. फेड इसमें फिर से डाउन टर्न चाहिए टू फेड टू बिकम मोर एंड मोर डोविश. सो मार्केट का फोकस रहेगा in this Tuesday data. Let's look at go to the economic calendar, make it 2-star. 2-star का जो डेटा हम लोगों को दिखेगा, we will want not previous week, we'll want this week. 2-star, this is the important data for UK, GBP, pound. अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम स्ट्रॉन्गर वी विल सी फर्दर अपसाइड इन पाउंड. पाउंड ऑलरेडी बहुत बढ़िया मूव कर चुका है, बट ट्यूसडे मार्केट विल मेजरली वेट फॉर दिस डेटा. कोर इन्फ्लेशन डेटा आई थिंक कुछ गलत दिखा रहा होगा यहाँ पे, आई थिंक 7 o'clock के आसपास होना चाहिए. I'll रीचेक द डेटा अबाउट द टाइमिंग. थोड़ा टाइमिंग दूसरे जगह से भी चेक कर लीजिएगा, और या फिर जब पास आएगा. Then we have the usual जो crude oil and natural gas का inventory data रहता है Wednesday and Thursday. And next हमें दिख रहा है this will be a mover, retail sales data on Thursday. ये भी mover होगा market का. So this is broadly the major important data that we are looking at. सबसे important next week जो बन रहा है, जो next week का mood set करेगा is the Tuesday US का inflation data. इसके अलावा जिसके ऊपर मैं नजर कंटिन्यूअस बेसिस पे आई एम ऑन दैट, लेट्स गो टू मेरीटाइम शिपिंग. आप लोग जानते ही होंगे, यू विल नो अबाउट दिस चार्ट, ट्रेडर्स इनसाइट. मैं चाइना वीकनेस के ऊपर ध्यान दे रहा हूं, कैसा चल रहा है वीकनेस और स्ट्रेंथ इन चाइना, और साथ में ऑन जियोपॉलिटिक्स आई एम क्लोजली वाचिंग द सुएज कैनाल कंडीशन. लास्ट जो अटैक हुआ था उसमें 3 सेलर मारे गए हैं. इफ यू हैव वॉच द लेटेस्ट न्यूज रिगार्डिंग द रेड सी, और मेरीटाइम शिपिंग में उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट दिख रहा है कि जो शिप ऑपरेटर्स वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके सेलर्स जो हो they drop into risk, and there's a significant decline in the number of ships passing through the Suez Canal and Red Sea का जो चेन है. साथ में ईरान के अगर एग्रेशन रिस्क अगर हम लोग मेजर करना चाहेंगे तो मैं इसके साथ मेजर कर रहा हूं. सो ईरान इज शोइंग सिमिलर एग्रेशन, नथिंग हैज चेंज, सिमिलर काइंड ऑफ ships and volume is still passing with a gradual decline. कि वो जो एरिया है उसको ही शिप इग्नोर कर रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग द लॉन्गर रूट थ्रू अफ्रीकन केप ऑफ गुड होप.
ये रहा केप ऑफ गुड होप. So here the shipping volume has significantly up compared to its historical standard, and clearly लगी रहा है कि this trend जो दिख रहा है this is going to continue. मतलब geopolitical tension जो है वो चलते जा रहा है. इसके अलावा जो हम लोग देखेंगे, विल टेक अ लुक एट, ये रहा हम लोग का ओवरऑल पिक्चर ऑन द डेटा फ्रंट. इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे टू द एनालिसिस ऑफ द मार्केट. तो दिस इज द यील्ड कर्व. यील्ड कर्व अभी भी इन्वर्टेड. दिस इज द यील्ड कर्व का जो स्लोप है उसको देख रहे हैं. सो ओवरऑल कर्व इज स्टिल इन्वर्टेड, एंड दैट मींस ये जो यूफोरिया रैली चल रहा है मार्केट में इन द बुलिश साइड, दैट इज स्टिल इज लाइकली टू कंटिन्यू. साइकिल का एंड तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे. सो द रैली इज थियोरेटिकली मींस फंडामेंटली अगर सोचा जाए, रैली इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू. अब ये जो एनालिसिस कर रहे हैं इसके साथ हम लोग इंडेक्स फ्यूचर एनालिसिस करेंगे. सो इन ये क्रिएट करने के लिए आई क्रिएट द फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप यूजिंग द invite only indicators SD Rainbow Wave version 1 and SD RSI X, and उसमें I'll select the index future and I'll switch off the strength table right now. क्योंकि हम लोग सारे चार्ट को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं. सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे इन द ओवरऑल जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ दैट इंडेक्स. That index is clearly bullish in the daily chart with an 86% probability, and momentum दिखा रहा है थोड़ा zigzag patterns. That means up down करते हुए stocks are still likely to continue higher. Significant upside is still could be pending. इसके साथ हम लोग चले जाएंगे आप यूएस इंडिसेस में, जो दुनिया का सबसे उनका शेयर सबसे ज्यादा है, अबव 40%. तो यूएस इंडिसेस में मेरा रिकमेंडेशन था लेट्स रिड्यूस द एक्सपोजर. बट S&P 500 में हम लोग अभी भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं थ्रू SPY, बट इन अ मोर रिड्यूस्ड मैनर. अभी भी ये ऊपर जाएगा, बट नाउ देयर आर उनके अलावा बेटर अपॉर्चुनिटी थे रिस्क रिवॉर्ड वाइज. सो हम लोग पार्शियली, मेरा ये रिकमेंडेशन था, बट यू शुड नॉट ट्रेड और डू थिंग्स ऑन एनीबॉडीज रिकमेंडेशन. आप खुद भी एनालिसिस कीजिए और देखिए. यहाँ पे जो दिख रहा है डाउ इज कमिंग बैक इन स्ट्रेंथ. हम लोग डाउ और नेस्डैक से रिकमेंडेड एग्जिट फॉर ओवरऑल इंडेक्स. S&P 500 में हम लोग अभी भी रह सकते हैं, बट नेस्डैक एंड डाउ में आई एम स्टिल नॉट रेडी कि मैं रिकमेंड करूं कि नहीं आप फिर से ग्रैब पोजीशन इंक्रीज करें, स्पेशली विद द डाउ. नेस्डैक और एक नया हाई बना रहा है. इट कैन गो अप, बट द पैटर्न इज नो लॉन्गर हेल्दी. It is a zigzag pattern, so it means the risk reward और the volatility जो है वो बढ़ते जा रहा है. So we will keep, even अगर Nasdaq हम लोग बाई रख रहे हैं उसमें reduced exposure ही रखना I will personally prefer. एक सेक्टर रोटेशन दिख रहा था यूएस में, मोर फ्रॉम बिग नेम्स टूवर्ड्स द अदर जो नेम्स है उस पे. लेट्स गो टू और एक वेबसाइट finviz.com. Under Finviz, let's go to maps. And उसमें मैप में मैं वर्ल्ड मैप दिख रहा हूँ. ग्लोबल पिक्चर 1 day परफॉर्मेंस आई एम सीइंग रेड अक्रॉस द बोर्ड. और अगर 1 week परफॉर्मेंस देखा जाए, ग्रीन्स आर मोर. चाइना इज स्टिल वीक, कंटिन्यूइंग लोअर. लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने रिकमेंड किया ये जो चाइना में हम लोग एक्सपोजर लिए थे टू एग्जिट दैट वन. इट वाज विल बी अ लॉस, नॉट अ सिग्निफिकेंट वन, बट विल बी अ लॉस इन दैट वन. सो जितना हम लोग 1 month 3 month दिख रहे हैं कि ग्रीन्स वेर मोर, बट जितना पास आ रहे हैं लाइक 1 day द रेड्स आर इंक्रीजिंग. सो ओवरऑल एक सेल ऑफ, सेक्टर रोटेशन, एसेट क्लास रोटेशन अवे फ्रॉम इक्विटीज दिख रहा है. स्पेशली जो स्ट्रेच्ड नेम्स है उनको स्पेशली दिख रहा है कि पीपल आर
गेटिंग आउट। सो यहाँ पे लास्ट अगर देखा जाए जो सेक्टर्स, जस्ट मोमेंट, हाँ, यहाँ पे जो दिख रहा है कि लास्ट 1 डे 1 वीक में जो आउट परफॉर्म किए रहे रियल एस्टेट, यूटिलिटीज, एंड जो दे हैव बीन इस मींस इस ईयर, लास्ट 1 ईयर बैटर्ड रियल एस्टेट, यूटिलिटीज। जो टॉप परफॉर्मर थे टेक्नोलॉजी, या तो हम लोग इसको कैपिटल वाइज भी लगा सकते हैं, कैपिटल वाइज जो यहाँ पे दिख रहा था जो टॉप परफॉर्मर थे, देर आर मेगा कैप्स like this Google and others, Apple, these are mega caps. Mega caps were driving the growth. अब जो दिख रहा है कि more small caps people are moving in the US to and here is mid, whereas mega caps से एक exit a sectoral rotation. तो similar pattern kind of India में भी we can expect that there will be this is not a capitalized market cap rotation, means जो already stretched है stocks उनमें से निकाल के those who are feel more balanced, not stretched momentum wise, उनमें जाना। सो मेरा भी यही रिकमेंडेशन रहेगा स्टॉक वाइज। So next we have come to US small cap, उसमें since this is I prefer more passive, यहाँ पे एक comeback दिख रहा है। So small cap में एक rotation मुझे already दिखा कि जब हम लोग went through Finviz charts. So this is I'm expecting further rise, this sectoral rotation. So US में जो है we can with a stop loss, obviously you can look at sectoral rotation to the small cap from the mega caps or more stretch stocks. इसके साथ हम लोग आ रहे हैं एशिया में। लुक एट द एशियन अपॉर्चुनिटीज। एशियन अपॉर्चुनिटीज, चाइना अगर देखा जाए इट इज स्टिल वीकली में जो बुलिश है, बट ओवरऑल अगर डेली चार्ट दिखा जाए तो इसमें भी एग्जिट आ चुका है चाइना A50, और हम लोग पहले ही एग्जिट कर चुके हैं थोड़ा बहुत लॉस में, बिकॉज चाइना का जो रिकवरी A50 बढ़ रहा था, बट अपना जो एक्सपोजर MCHI which is more of a जो बढ़ेगा जब ओवरऑल चाइना एक्सपेंड होगा, बिकॉज इट इंक्लूड्स H शेयर्स, P शेयर्स, रेड चिप्स जो पहले ही एग्जिट दे दिया। सो चाइना जो स्टोरी है दैट इज नॉट अ ओवरऑल रियल गुड कमबैक स्टोरी। तो यहाँ पे अलर्ट डाल के वी कैन मूव अवे, एंड दिस चाइना रिमेन्स एक मेजर काउंटर जो एक ग्लोबल वीकनेस ट्रिगर कर सकता है। सो एशिया में अपॉर्चुनिटीज जो थे, दैट इज अनदर वन इज जापान, जो रिकॉर्ड हाई रीच करने के बाद इज नाउ रिट्रेसिंग। सो जापान से एक्सपोजर हटा लेना सही होगा। दिस इज अ फुल रेड कैंडल इन जापान। सो जापान की इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, लेट्स एग्जिट देम। सो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। लेट्स कम डाउन टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल नॉट एज बैड, इट इज मूविंग हायर। तो ऑस्ट्रेलियन इंडिसेस मतलब ओशेनिया का जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसमें हम लोग एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिस्ट गूगल में जाके सिंपल सर्च करने से ही आपको मिल जाएगा। एंड जो मेरे स्टूडेंट्स आई एम वर्किंग ऑन अ मोर रिफाइंड लिस्ट, आई विल सेंड इट टू यू सून। सो न्यूजीलैंड, ये अनदर स्टोरी इज अ कमबैक। जो लास्ट टाइम हम लोग देखे थे स्ट्रॉन्ग कमबैक स्टोरी, इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। जो आउटसाइड है, आउटसाइड इंडिया, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू through exchange traded fund. Increase the exposure in New Zealand, Australia, exit from China, exit from Japan. Another one we are interested in Asia is Singapore. Singapore is a top, is a miracle economy. Such island economy has gone awesome. So यहाँ पे Singapore preferred will be more in the weekly format. I don't see many reasons to go for Singapore, whereas China is weakening. So the story in Oceania and Asia more towards Australia and New Zealand, और साथ में अपना जो इंडेक्स है Nifty 500, India has been an outstanding performer. So India में भी overall bulls are intact. New buying could come up. यहाँ पे RSI जो है RSI X वो सस्टेन कर रहा है above the slow RSI line. स्लो RSI लाइन के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, सो इट कैन सिग्निफिकेंटली गो अप फर्दर। इसमें हम लोग पोजीशन रिड्यूस करने की बात किए थे,
एंड उसी के साथ मैं टिका हुआ रहूंगा. आई विल नॉट फर्दर इंक्रीज, रादर आई फील दिस इज अ स्ट्रेच्ड, मतलब बेहतर चांस दूसरे जगह मिल रहा है थ्रू ETF. So immediately Indian ETFs, the way India is going up in a now more in a zigzag format, we are not getting compensated well for the risk of taking. The candles are getting smaller, so we don't know if there will be a new breakout or this could be a fall to the downside. But India में हम लोग जरूर exposure रखना पसंद करेंगे. Overall ETF की बात कर रहा हूँ. I'm not talking about individual stocks right now. So India का जो story दिख रहा है कि Nifty 500 is much weaker than Nifty 50. That means India has now become more SME sector or small caps or individual small stocks. They are stretched. Retail's money has chased low price stocks and put them stretched like Infibeam. Let's look at Infibeam. ये रहा Infibeam. The way it has moved, फिर से breakout आ रहा है. And this is a new opportunity of entry as a stock. But this has been stretched. This is a stretched move. Look at the move, the parabolic kind of move we have seen. So here the story in India is becoming more of a moving into more stable stock, more low volatility stocks than into smaller caps where it can go give you bigger return. So bigger return नहीं, अब time है look at more stable kind of return देखने का. यूरोप एक ऑसम अपॉर्चुनिटी. यूरोप में मैं बहुत स्पेसिफिक हूं. आई विल नॉट गो टू 19 यूरोपियन कंट्रीज. इटली इज वन. इट इज फायरिंग. हम लोग इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे इन इटली. इट इज हाईली रिकमेंडेड. नाउ यू कैन सी अ मोमेंटम. अगर ये फर्दर स्लो डाउन होता है मोमेंटम का, विल रिड्यूस एक्सपोजर. इफ वी सी रेड कैप्स, विल सी स्मॉल एक्सपोजर. बट ओवरऑल इटली हैज गिवन ऑसम रिटर्न. ये जो 30,000 का ब्रेक, नाउ वी आर सिटिंग ऑन अ 10% गेन फ्रॉम जनवरी टू दिस मार्च, विच इज 3 months. थर्ड मीन्स इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट 40%. If you approximately मान रहे, exactly नहीं, approximately yearly. So it has been a good ride. So with momentum it bit slow down दिख रहा है. So अगर इसमें continuation होता है in the momentum to the downside, Italy is a mature product. उसमें हम लोग profit book करना पसंद करेंगे. जो कमबैक प्रोडक्ट थे, दैट इज अ कमबैक स्टोरी, इज अ स्पेन वाज अ कमबैक स्टोरी, अ ब्रेकआउट स्टोरी. हम लोग इसमें अभी भी रहेंगे. दिस कुड बी अ वेंट अप फर्दर स्टोरी अनलेस वी सी सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन और रेड कैप्स इन ड्रॉडाउन इन मोमेंटम, साथ में रेड कैप्स. और जो लोग ये सेटअप यूज करते हैं, आप लोग को मालूम है ये रेड कैप्स क्या है. दीज आर द स्मॉल रेड कैप्स विच आर द प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल. CAC 40 another breakout, but short term momentum साथ नहीं है. So with this, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है will reduce exposure in France now. अगर आपका 100 अगर इसमें है तो आप 50% exposure reduce करना चाहेंगे towards France ETF. एंड अगर बुलिश है तो ओवरऑल जो यूरोप 600 ETF या ब्रॉडर यूरोपियन ETF है, आप उसमें रहना पसंद करेंगे. जर्मनी स्टिल अ कंटिन्यूएशन स्टोरी and will remain bullish. ये जो यूरोपियन ब्लू चिप इंडेक्स नया हाई बना रहा है, बट मोमेंटम थोड़ा जिगजैग कर रहा है. दैट मींस इट कुड बी राइप हो रहा है अपना जो ट्रेड, अपना जो ब्रेकआउट, अपना जो लवली राइड, ये धीरे धीरे राइप हो रहा है. इट कुड बी अ टाइम टू टेक अवे सम प्रॉफिट. आई विल टेक, if short term momentum turning bearish, 20 to 25% of the profit I'll recommend to take away from here. सो ये रहा इक्विटी इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल पिक्चर. एक विल लुक एट द लास्ट यूरोप 600. इट्स अप. सो यूरोप 600 इज बेटर विद स्टेबल देयर. मूव अवे फ्रॉम CAC 40. जो पैसा बच रहे दैट वी कैन सेक्टर मींस वी कैन रोटेट बैक टू ओवरऑल 600 और यूरोपियन 50 ब्लू चिप इंडेक्स. इसके बाद हम लोग जाएंगे बॉन्ड मार्केट में. Bond market has really surprised a bit
टू द डाउन साइड ये काइंड ऑफ मूव देके दिस इज अ गुड मूव। हम लोग थोड़ा टीएलटी बाई का बात किए थे। लुकिंग एट द 30 ईयर, कांट से कि इट इज इन प्रॉफिट, इट इज इन आइदर ब्रेक इवन और इन मार्जिनल लॉस। नाउ वी आर इन अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर, 3rd ईयर बॉन्ड में अगर देखा जाए तो। सो दिस इज अ रिट्रेसमेंट, न्यू ब्रेकडाउन नहीं। तो ये जो ट्रेंच बॉटम एरिया है, दिस इज प्रोवाइडिंग सम सपोर्ट टू द रेट। सो मैं चाहूंगा 4.2 का एक क्लियर ब्रेकडाउन हो जाए बिफोर वी कैन गो फॉर फर्दर सिग्निफिकेंट क्वांटिटी। अगर पॉसिबल है यहां से रिवर्स हो, दिस प्रोवाइड्स अ सपोर्ट, because weekly में अभी तक we did not get a full red candle. We got a short trend bearish, but we did not get a full red candle. So इसको significantly sell नहीं, थोड़ा TLT exposure। जो लोग TLT के बारे में नहीं जानते, this is a bond market very popular fund जो इंडिया में रह के भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। 20 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड्स, सो 20 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड्स में ये जो राइज, सो दिस इज वेयर वी हैव लार्जली एंटर्ड, so this is in loss right now. So let's see how it goes. First of all, if it turns green, obviously we'll exit, but if it falls down, it will increase the exposure significantly, especially अगर 4% टूट जाता है, then will drop. Now मेरा concern ये थोड़ा आ रहा है, this kind of drop जो दिख रहा है suddenly, हम लोग को ड्रॉप पहले ही दिखा था टर्न अराउंड में, बट रियली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ मूव, क्योंकि ऐसा कोई डेटा नहीं था जो जस्टिफाई कर रहा है दिस काइंड ऑफ मूव। इतना डोविश, मतलब इतना लो इन्फ्लेशन वाइज डेटा नहीं था। सो ये मुझे कॉन्सर्न आ रहा है, व्हाट इज दिस अ फ्लाइट टू सेफ्टी? मतलब जो बिग प्लेयर्स है वो लोग थोड़ा सेफ्टी के तरफ भाग रहे हैं, या मार्केट श्योर हो गया या नहीं, अब ये स्लो डाउन आ रहा है, इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग टू गो अप। सो ये एक फोकस रहेगा कि मेरा, कि लेट्स टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सा थीम में ये भारी हो रहा है। इज इट अ फ्लाइट टू सेफ्टी, रिस्क एवर्शन बाय बिग प्लेयर्स, or is it a real market is determined that no, our inflation is now over? So bond market में light position, and this overall जो short term bonds है that we can keep short, because so we can keep long, sorry, because Federal Reserve is expected to cut interest rate, but इसमें ज्यादा capital gain नहीं होता compared to TLT। इसका जो ticker है that is the SHY। SHY अब में या तो आप ट्रेजरी 325, टिकर नहीं दिखा रहा, लेट्स ट्रेजरी 3 to 10। दिस इज आदित्य बिरला का जो है, वी कैन एक्सपोज आवर सेल्फ मोर टूवर्ड्स द बेली ऑफ द कार, बोलते हैं इसको 3 to 10 ईयर बॉन्ड्स में, rather than front end is to eat the interest rate more, whereas the long end is for capital gain. So we can go for a balanced strategy of the midpoint of the car, mid of the car. उसमें इंटरनेशनल जो ईटीएफ होता है वही मेरा प्रेफरेंस रहता है, rather than आदित्य बिरला का जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अवेलेबल है। उसके साथ हम लोग देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का 10 ईयर बॉन्ड्स को, इन द इट्स गोइंग डाउन। वीकली चार्ट इज आवर फोकस, क्योंकि इसमें हम लोग ज्यादा टाइम रहना चाहते हैं, एंड वी कैन सी फर्दर डिक्लाइन, मतलब हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं इन द इंडियन लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड। सो दिस इज, ये रहा बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की स्टोरी। इसके बियॉन्ड भी अपॉर्चुनिटीज है डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड सेगमेंट्स में, बट उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। लाइक जर्मन बॉन्ड्स, गिल्ड्स जो यूके बॉन्ड्स है। विल गो टू कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज में ब्यूटीफुल राइड मिला है, आई थिंक आप लोग सब लोग एंजॉय कर रहे हैं जो मेरे रेगुलर रीडर है। गोल्ड व्हाट आ ब्रेकआउट, हम लोग 2060 का ब्रेकआउट लेवल था। व्हाट आ मूव इन गोल्ड, विल रिमेन इन्वेस्टेड इन गोल्ड। मैं बहुत बहुत दिनों से बोल रहा हूं गोल्ड इज इन अ बुलिश साइकिल,
फ्रॉम अक्टूबर 2022 जब इंडिया में गोल्ड वाज 49,000, अभी भी मेरा स्टॉकेज का सोशल पोस्ट, anyone can go back in history and check, because I was saying we have moved to a recessionary cycle. But usually ये cycle का जो second leg है, मतलब crash leg, that is bearish for gold. But इस बार gold can definitely, it can make a difference. Um, so this is significantly rise in gold. I'll remain fully invested. मेरा जो capital है कि gold के लिए allocated, I'm fully on that. So unless I see red caps into this one, currently not planning to exit. और इसमें very likely Monday हम लोग एक correction देखेंगे. This kind of drawdown is very natural, Japanese time correction. So इससे मैं I'll be not at all bothered ही नहीं होऊंगा. So with this correction, I want red caps after Monday European markets opens up, or preferably US markets opens up. So gold I'll remain bullish. Silver मैं बहुत बार बोला, I've not been that bullish. एक entry लिया था above 24, which did not work out much. फिर से re-entry का opportunity मिला. Again, after riding a bit, it came down. So very likely मेरा जो decision था कि silver is still not good, because overall lot of resistance silver को cover करना पड़ेगा. And अगर it's gold के पीछे जो reason I think is fueling, one is monetary. US का interest rate breakout in the 30-year. This is one factor. Gold is behaving differently this time. So gold में मेरा focus रहना has been good, much better rather than keeping silver. But silver में भी मैं थोड़ा exposure रख के, small exposure रख के देखना चाहूंगा how this ride continues. अगर बाद में build करने का जरूरत पड़े, this initial position helps me to build further quantity. इसके साथ हम लोग देखेंगे क्रूड ऑयल में मेरा डिसीजन आफ्टर द लास्ट लॉस मेकिंग टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट हैज बीन प्रूवन वेल. ये जिगजैग हो रहा है, कभी बुलिश कभी न्यूट्रल. सो आई विल कंटिन्यू टू अवॉइड क्रूड ऑयल अनलेस आई सी अ सिग्निफिकेंटली ब्रेकआउट ऑफ द 6621 एरिया, एंड उसके ऊपर क्लोज होना पसंद करूंगा. अदरवाइज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टुवर्ड्स क्रूड ऑयल. नेचुरल गैस 125 मिनट्स चार्ट, 125 मिनट चार्ट में नेचुरल गैस का जो बाइंग हम लोग देखे थे वो फेल हो गया. ये थोड़ा जिगजैग मोड में चला गया. इफ यू लुक एट द डेली चार्ट, ये जो लास्ट बाइंग अटेम्प्ट था दैट डिड नॉट वर्क आउट. वी हैव गॉट red background but no full red candle, so it's a mixed market situation. Preferred trades buy breakout, buy support. Sell trade is win probability is 39, buy का तो बहुत ही कम. तो ये एक ऐसा मार्केट है जो मोर ऑफ अ बाय सपोर्ट सेल रेजिस्टेंस मार्केट है. सॉरी दोस्तों. तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेरा और एक ट्रेड जो जिंक, जो हम लोग मेरा लास्ट जो वीडियो वी डिस्कस, बट जिंक में मेरा पोजीशन इज नॉट सिग्निफिकेंट, एंड विद दिस द पोजीशन आई हैव फुल्ली एग्जिटेड नाउ. Zinc, this was anyway a light position. I did not gain much, but zinc में future में gain is possible. So we will like to see a solid break of 225. उससे भी important है zinc कहां से break हो रहा है. अगर जिंक ये स्लैंटिंग जोन से ब्रेक हुआ, देन इट हैज सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी टू गो अप. इट कुड बी अ रियल बुलिश टर्न in zinc. But if zinc tries to break this area, this is a strong support or resistance zone, flat line. तो zinc कभी नीचे सपोर्ट मिल जाएगा 219.25 एंड ऊपर रेजिस्टेंस इज 224.60. तो ये सब सिचुएशन में एग्जिट करना ही बेहतर है. एंड जब एग्जिट दिखा देता है मेरा सिस्टम, आई डू नॉट रिमेन. दिस रेड कैप्स इज पार्शियल एग्जिट. बैकग्राउंड येलो टर्निंग इज फुल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट.
तो यहाँ पे और कोई सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं. कॉपर आई एम नॉट लुकिंग एट स्टिल. एल्यूमिनियम इन रेंज, यू कैन हैव अ लुक एट मेरा प्रीवियस वीडियो. जो इंटरेस्टिंग था दैट इज यूरो यूएसडी. इसमें मेरा लॉन्ग पोजीशन है यूरो यूएसडी में, दैट वी डिस्कस्ड लास्ट जो मेरा वीडियो है. नाउ what now question is what now. When what now is euro moved above this, but unfortunately देखा जाए it could not sustain. Now as it could not sustain, very likely will see further correction in crude oil as euro USD as Monday opens up. But I will not be too bothered about this immediately. So what I will do, I will look for buy opportunities. First will be to see if I can take some money home. Because significant एक doji मिला है. So after taking some money home, say tune of 30%, I will keep that 30% for re-entry opportunity after a correction. Very likely correction अगर ये bullish है should not go below 1.09 or 1.088. ये इस स्मॉल रेंज में कंसोलिडेशन के बाद वी कैन सी फर्दर ब्रेकआउट. मेन जो मूव होने वाला है नेक्स्ट इज गोइंग टू हैपन ऑन ट्यूसडे विथ द इन्फ्लेशन डेटा. तो उससे पहले मैं देखूंगा कैसा है एंट्री अपॉर्चुनिटीज. इमीडिएटली थोड़ा प्रॉफिट हटा लूंगा मार्केट से बिकॉज इट्स अ गुड लेवल वाज रीच्ड. उसके बाद करेक्शन आ रहा है विथ अ स्पाइक. Spikes मतलब supply zone, so it is better to take some money home. साथ में GBP USD looks more bullish. इसमें ब्रेकआउट एंड बाई रहना हैज बीन वेरी लुक्रेटिव, बहुत ही बढ़िया हुआ है. इसमें कोई सिग्नल नहीं आया है बट आई विल लुक फॉर प्रॉफिट बुकिंग मतलब टू द वंस अगेन टू द ट्यून ऑफ 30%, क्योंकि माउंटेन टॉप रेजिस्टेंस रीच हुआ है. प्लस सामने इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है एंड उससे पहले एक रिट्रेसमेंट इज वेरी लाइकली. सो रिट्रेसमेंट से पहले मैं वेट करूंगा एंड ट्यूसडे बिफोर द इन्फ्लेशन आई विल गिव अ स्ट्रॉन्ग थॉट कि मैं अपना पोजीशन फिर से इंक्रीज करूं या नहीं. बट फर्स्ट मेरा फोकस रहेगा टू टेक 30% ऑफ द मनी होम. नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज यूएसडी जेपीवाई. इसमें एज आई सेड आई वाज लेट बिकॉज आई वाज वेटिंग एंड दिस मूव्ड वायलेंटली. बट लेट देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर, एंड वी आर इन ए गुड प्रॉफिट. वेरी लाइकली दिस इज द मेन लेवल जिसके आसपास इट हैज रीच्ड. once again we might see a correction but I don't think this is over. Very likely yen will reach and test out this level 145.5, 146.1, और ये level is almost was reached 146.5. and ये जो रेंज है ये रेंज एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टुवर्ड्स यूएसडी जेपीवाई. बट मेन जो मूव वंस अगेन ये होगा ऑन द इन्फ्लेशन डेटा. नाउ सिंस मैं लेट हूं इसमें, माय पोजीशन इज लाइटर कंपेयर टू द अदर वंस, तो इसमें मैं एग्जिट का नहीं सोचूंगा डिस्पाइट द करेक्शन जो होने वाला है, बिकॉज आई वांट टू सी द थ्रू. एंड सिंस इसमें बड़ा पोजीशन नहीं है, ओवरऑल मेरा रिस्क एक्सपोजर इज लेस, आई कैन सी बिगर ड्रॉडाउन्स. और करेंसी मार्केट में पोजिशनल ट्रेडर अगर एक्सपेक्ट नहीं कर, इफ यू आर नॉट रेडी टू गो फॉर अ ड्रॉ डाउन, then obviously if you are not either hedged, India में hedge का option नहीं है, but outside their option hedge, you can, if you want, you can hedge the correction risk, but you should be very much aware कि there will be and very likely will be a correction. Then we'll have look at the other opportunities. JPY INR, what a move. मुझे बुरा ही लग रहा है कि मुझे इतना मिस हो गया. It was my setup was given a solid opportunity to buy, but मैं इस कैंडल को फुल देखना चाहता था because it is a opposite side candle. But next day, as by the time our market opened up, it already moved significantly higher. But आप कभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि आप लेट हो गए, इसीलिए फोमो क्वांटिटी. और देखिए हम लोग ब्यूटीफुल बाई में ऑलरेडी बैठे हैं एंड वेरी लाइकली आफ्टर करेक्शन आई एम गोइंग टू इंक्रीज पोजीशन इनटू दिस वन.
and this is likely to reach up to this level 57 and 50, yeah, 57 to 57.6. USD INR little disappointed me. I'm बहुत दिनों बाद मैं इसमें शॉर्ट गया हूं. I'm in profit. That is quite a good profit क्योंकि I have entered early. बट ये जो नॉन फार्म पेरोल हुआ जिसमें डॉलर वीक हुआ फॉर मेनी अगेंस्ट करेंसीज लाइक येन एंड डॉलर कुछ दिनों से ये वीकनेस हुआ है, पाउंड, इवन यूरो, द आईएनआर में वो फॉलो अप मैं आफ्टर नॉन फार्म आई वाज एक्सपेक्टिंग. मे बी आईएनआर फॉलो अप आई विल गेट आफ्टर इन्फ्लेशन डेटा. नाउ इसमें आई एम एंटर्ड अ लिटिल लॉन्ग टर्म पोजीशन, मींस लॉन्गर मंथ. I want to see this through. So INR a bit disappointment कि I was expecting कि non-farm कि it will reach 82.5. Maybe it can reach when market opens up on Monday. क्योंकि अपना इंडियन मार्केट जो इज नॉट ओपनड अप बिकॉज आरबीआई काफी टाइम से इट इज क्लोज्ड, फ्राइडे क्लोज, सैटरडे क्लोज, संडे क्लोज. So Monday we may see the downward movement, but let's see how it goes. If once again INR starts coming back, I'll be a bit on the disappointing side on the INR. So inflation data, very likely I'll continue to hold my short in INR. I'm looking at the weekly chart in this one. बहुत दिन बाद ऐसा opportunity मुझे मिला है, background red, and इसमें risk reward was too good when I entered, so I'm going to hold this one. So next जो आ रहा है, this is GBP INR. GBP INR I was ये जानबूझ के I was late. This is not like Japanese yen. I wanted the convincing जब मुझे लगा कि ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, this level, then only after above 105.5 I've entered. The trade is in broadly profit and I'm now expecting much bigger gain from GBP INR. So GBP has broken the mountain top. It is very likely breaking the top here. So GBP INR I'm expecting further gain, and as per Rainbow का जो rule है, I'll continue to follow up here. साथ में यूरो आईएनआर went up, gave good profit, and Monday this is going to open up in profit, but अब ये congestion zone में जा रहा है, तो इसमें मैं ज्यादा क्वांटिटी बुक करूंगा टू द ट्यून ऑफ 50 to 70%. ये रहे एग्जैक्ट ये लेवल रीच होके देखिए, ये स्पाइक मारा है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इट वोंट गो अप मंडे. इट कैन गो अप, वेरी लाइकली इट विल गो अप and even can reach 91. But in this conversation, the way it will go up, ये भी मैटर करता है, not just going up. So going up जैसे हो रहा है, तो इसमें मैं उतना जितना रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है compared to the risk is low. So to the tune of between something between 50 to 60%, I will, or 70 maybe, to the I will look to the tune of booking profit. क्योंकि Euro USD I'm already exposed and I will increase my exposure to the Euro USD because dollar seems more weaker than INR. इसके साथ साथ जो पेयर में हम लोग एग्जिट किए एंड आई एम नॉट ट्रेडिंग राइट नाउ डिस्पाइट द अपॉर्चुनिटी टू द डाउन साइड हैज बीन यूरो येन. यूरो वीकनेस की वजह से इट हैज मूव लोअर. Now this is very interesting. Yen moves like this, but since ye move I did not trade, I will no do a late entry right now. So I'll see अगर ये trade चला जाता है, चला जाएगा, because currently Euro is also a bit strong. Yen is definitely strong, especially pound yen. Pound yen we got a signal and it made a move because yen ज़्यादा weak है, but better trade was to short the dollar. So pound yen, यहाँ पे भी last trade has failed. So this is a contra trade. Contra trade immediately लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसमें risk reward देख के, favorable देख के लेना चाहिए. It's not just you blindly jump to a buy and आप कर सकते हो, that will also be profitable in Rainbow, but that's not the way I do it. So here my other judgments, I see a better trade जहाँ पे मुझे better trades दिख रहे हैं, I'll do the better trades. और हो सके इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, दिस कम्स डाउन टुवर्ड्स जो एक्सपेक्टेड लेवल 187. Maybe unemployment rate will be weak in GBP. I don't know what's going to happen.
but this I will prefer to say stay away from, or more take a closer look at how ये spike के बाद कैसा behave कर रहा है, वो देख के I will be taking our decision. So to summarize आने वाले दिन में, so overall equity long position still there is no, but उसमें rotation करना पड़ेगा more towards stable low volatility low beta, more towards exchange traded fund जहां पे हम लोग growth देखें. Bond market, this could be a great opportunity to turn into TLT. उसके लिए नजर रखना पड़ेगा. Will remain invest in Indian bonds, Indian long term bond fund, not bonds, bond fund. Then Euro USD correction, profit booking, GBP USD profit booking, GBP INR, I will stay no profit booking despite if correction comes up. USD JPY, I'm a little low on position, so even correction comes up, I'll stay. JPY INR, I'm looking for about much another 1 rupee at least approximately. This is not fully one, around 75 paisa to 1 rupee kind of gain could still be pending. Euro yen, pound yen could be an opportunity, but I'll prefer to stay away from euro yen, pound yen. So ये जो setup है, this is different currency commodity का जो हम लोग general fountain of gold का जो main mother setup है, उसके जरिए we took a look at this where the table is same in case of index future and fountain of gold, but it is recommended कि आप individual currency के लिए currency apply कीजिए ताकि नीचे जो strength meter है वो available हो जाएगा. स्ट्रेंथ मीटर ऑन करते ही नीचे रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख जाएगा एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ में यू विल बी एबल टू सी अपॉर्चुनिटी. सो जीबीपी राइजिंग, येन राइजिंग, आई एम स्टेइंग लॉन्ग. यूरो प्रॉफिट बुकिंग, डॉलर शॉर्ट, एंड INR I am not happy. This unhappiness can lead to some trades, means I might reduce some position, I'll reconsider, but this could be still a bigger gain because I've gobbled up option trades which are in profit and they are long-term options, means I can still gain big time. So I'll reconsider to do what I'm going to do in USD INR. तो इसके साथ मेरा डिस्कशन आज खत्म करूंगा. काफी लंबा डिस्कशन हुआ. आई होप ये जो होल वीक का डिस्कशन हुआ इससे आपको हेल्प हुआ है. अगर हेल्प हुआ है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड हैप्पी ट्रेडिंग.